गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं पीयूष गोयल जी, वो हाई लेवल टॉक्स कर रहे हैं यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ, ताकि जो फर्स्ट ट्रांच है इंडिया यूएस ट्रेड डील का वो फाइनलाइज हो सके। और इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है यूएस के साथ वो ऑलरेडी 40% से कम हो चुका है। तो इंडिया का जो गुड्स ट्रेड है यूएस के साथ वो लगभग 149 बिलियन डॉलर्स का है 2025 में। अगर हम देखें, जो रिलेशनशिप है वो एक्सपैंड होकर बियॉन्ड मर्केंडाइज ट्रेड हो चुका है। उसमें सर्विसेज भी आ गई हैं, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, स्ट्रेटजिक सप्लाई चेन्स। और एट द सेम टाइम अगर हम देखें, इंडिया यूएस ट्रेड टाइज जो है वो उसमें कुछ फ्रिक्शन है ओवर टैरिफ्स, मार्केट एक्सेस, एग्रीकल्चर सब्सिडीज़, डिजिटल रेगुलेशन, लोकलाइजेशन रूल्स। ठीक है, एक सेंट्रल इशू इसमें यह है कि जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसमें इंडिया जो है वो एक सरप्लस इंजॉय कर रहा है मर्केंडाइज ट्रेड का विद द यूएस। वाइडर ट्रेड इन्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा अनसर्टेन हो चुका है, बिकॉज यूएस जो है वो अपना सेक्शन 301 की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट, और उसके बेसिस पर एक न्यू टैरिफ आर्किटेक्चर भी ला सकता है। तो जो कमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है उनका कहना है कि इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है वो 40% से डिक्लाइन हुआ है पिछले साल में, क्योंकि जो टैरिफ्स लगाए गए थे। शार्प डिक्लाइन जो है वो इंडिया की ट्रेड पोजीशन को दिखा रहा है, वो यूएस के मुकाबले वीकन हुई है इवन बिफोर द यूएस इंडिया ट्रेड डील अगर कंक्लूड हो। ये सरप्लस जो है कई कई तरह के कंसेशंस और चेंजिंग इंपोर्ट पैटर्न्स की वजह से हो रहा है। जैसे कि इंडिया के जो पब्लिक सेक्टर रिफाइनर्स हैं वो अब एलपीजी वहाँ से प्रोक्योर कर रहे हैं, और टॉप सोर्स बन चुका है वो एलएनजी का इंडिया के लिए यूएस जो है वो ऑलरेडी ग्रेटर एक्सपोर्ट एक्सेस हमारे एनर्जी और प्रीमियम कंज्यूमर सेगमेंट्स में गेन कर चुका है। ठीक है, और इंडिया का एक्सपोर्ट भी वहाँ पर कम हो रहा है। ठीक है, अब देखें अगर हम, तो इम्पोर्ट्स जो हैं वो यूएस से जंप हुए हैं 136% से। इम्पोर्ट इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 33% से फॉल हुए हैं इनफैक्ट। अब वो पैटर्न आपको ऑर्गेनिक केमिकल्स, कॉपर प्रोडक्ट्स, मोटर व्हीकल्स, फ्रेश फ्रूट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में देखने को मिल रहा है। ठीक है, और एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हुए हैं और इंपोर्ट्स जो है वो राइज हुए हैं। तो मतलब स्ट्रॉन्ग यूएस का कंपटीशन आ चुका है इंडियन मार्केट में। और अब एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट इशू है। कई फार्म ग्रुप्स का कहना है कि गवर्नमेंट जो है उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए फार्म इंपोर्ट्स पर, क्योंकि यूएस जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट यूएस जो है वो एग्रीकल्चर सब्सिडी प्रोग्राम चलाता है वर्ल्ड का। और जो खासकर जो एप्पल, आमंड्स, वॉलनट्स, सोयाबीन, कॉटन और रबर फार्मर्स हैं, उनके सबसे ज़्यादा कंसर्न्स हैं इस चीज़ से रिलेटेड। अब टॉक्स चल रही हैं ऐसे टाइम पर जब यूएस प्रिपेयर कर रहा है एक न्यू टैरिफ रजीम अंडर सेक्शन 301 प्रोसेस। अभी ये एग्रीमेंट सिर्फ ट्रेड प्राइस को इम्प्रूव करने के लिए नहीं है, बल्कि इंडिया को टैरिफ एक्शन जो फ्यूचर का हो सकता है उससे शील्ड करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? शेप करेगा ये फ्यूचर इंडिया के एक्सेस का टू वन ऑफ इट्स बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट्स जो यूएस है बेसिकली। और ये ऐसे टाइम पर आ रहा है कि जब इंडिया का ट्रेड सरप्लस जो है वो यूएस के साथ ऑलरेडी नैरो हो रहा है। थर्डली अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर जो है वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सेंसिटिव सब्जेक्ट है। और फाइनली अब अगर हम देखें तो जो है टॉक्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ब्रॉडर स्ट्रेटजिक बैलेंसिंग एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वेस्टर्न घाट्स ईएस से। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया नोटिफिकेशन जो करंटली वैलिड है अंटिल द एंड ऑफ जुलाई 2026 फिर से फोकस में आई है, क्योंकि 6 स्टेट गवर्नमेंट्स अभी भी रेजिस्ट कर रहे हैं फाइनलाइजेशन ऑफ ईएसए बाउंड्रीज। तो वेस्टर्न घाट्स पहले हम समझते हैं अनब्रोकन माउंटेन चेन है जो 1500 किलोमीटर लंबी है इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर। ये घाट्स जो हैं वन ऑफ द 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के इन द एंटायर वर्ल्ड, और ये हाइड्रोलॉजिकली क्रिटिकल हैं। अब वेस्टर्न घाट्स जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड है और इकोनॉमिकली एक्टिव हैं। ठीक है, अब ये 6 स्टेट्स में फैले हुए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। अब जो ईएसए एक्ट है 1986 का, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई करता है कई एरियाज़ को, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ जिनको इको सेंसिटिव जोन्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि कई तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो प्रोहिबिटेड होती हैं या रेगुलेटेड होती हैं, जैसे माइनिंग, क्वेरिंग, रेड कैटेगरी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़, थर्मल पावर प्लांट्स, लार्ज कंस्ट्रक्शन एंड टाउनशिप्स। अब 2 पैनल की रिपोर्ट्स हैं यहाँ पर। अगर हम देखें गाडगिल पैनल जो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट पोजीशन जिसने ली थी, जिसने कहा था कि पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए इन सब एक्टिविटीज़ के लिए, उसको पूरे को आप ईएस से डिक्लेयर कर दो। ठीक है, लेकिन फिर कस्तूरी रंगन पैनल जो है 2013 का, उन्होंने कहा कि नहीं, पूरे को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, जो 40% है उसको सिर्फ आप डिक्लेयर करो जो एरिया को ईएस से। तो सेंटर ने फिर ड्राफ्ट ईएसए नोटिफिकेशन मार्च 2014 में निकाली, और जो है वो उसको 56,000 के आसपास का स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था
जो कि 60,000 तो कस्तूरी रंगन पैनल ने जो है वो सजेस्ट किया था, बट गवर्नमेंट ने 56,000 के आसपास या 57,000 के आसपास स्क्वायर किलोमीटर के आसपास एरिया को ESA डिक्लेयर किया। और 2014 से जो है ये कई बार रिवाइज हो चुका है, ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। जुलाई 2024 में एक प्रोविजन जो है फाइनलाइज किया गया कि ESA को हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, उसको फेज्ड मैनर में, स्टेट वाइज मैनर में हम इंप्लीमेंट करेंगे। अब स्टेट्स क्यों ऑब्जेक्ट कर रही हैं? कोर ऑब्जेक्शन तो इकोनॉमिक है, क्योंकि उससे सिवियर रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पर, माइनिंग पर, क्वारिंग पर और कंस्ट्रक्शन की उनकी टेरिटरीज़ में। सबसे ज़्यादा कर्नाटका इसको रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। 2022 में गवर्नमेंट ने इसको इशू को रिजॉल्व करने के लिए संजय कुमार जो है उनकी कमेटी में एक और कमेटी जो है वो बनाई, जो रिजॉल्व करना चाहती है ग्राउंड लेवल डिस्प्यूट्स को। कमेटी जो है वो कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी देने को कह रही है स्टेट्स को, जैसे पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, मतलब स्टेट्स को फाइनेंशियल कंपनसेशन मिले उन इकोलॉजिकल सर्विसेज की जो वो उनके फॉरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन स्केलेटल रिमेन्स जो है राखी गाड़ी में जो पाए गए हैं, ASI ने उसे एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हैंड ओवर कर दिया है। तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है जो एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च और करती है और कई स्टडी करती है डाइवर्स कल्चर्स ऑफ इंडिया को। ये ओनली रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो परसू करती है एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। और कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। 1945 में इस्टेब्लिश हुई थी और इनिशियली इसको सेटअप किया गया था स्टडी करने के लिए ट्राइब्स और कास्ट ऑफ इंडिया को और देयर वे ऑफ लाइफ। अब ये एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है एक्सपैंड हुआ, उसने अपनी रिसर्च एम्बिट को एक्सपैंड किया है, जिसमें अब वो इंटायर गैम्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी को स्टडी करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं निर्भय चेतना इनिशिएटिव। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज और गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्भय चेतना जो है वो रोल आउट किया है सेंसिटाइज करने के लिए 17.5 लाख मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को। ये की इंटरवेंशन है अंडर निर्भय रहो इनिशिएटिव और निर्भया फंड के अंडर ये इंप्लीमेंट हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा, ताकि जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस दी जा सके। अब इसमें क्या होगा कि मेल रिप्रेजेंटेटिव्स को जेंडर इक्वालिटी और वुमेन सेफ्टी के बारे में सेंसिटाइज किया जाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग और लीगल अवेयरनेस की जाएगी अमंग इलेक्टेड वुमेन, और इंस्टॉलेशन होगी CCTV कैमरास की स्ट्रेटजिक रूरल लोकेशंस पर, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अंबुबाची मेला। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एनुअल जो अंबुबाची मेला है वो स्टार्ट हो गया है कामाख्या टेम्पल में। अंबुबाची मेला जो है वो मानसून सीजन के टाइम पर होता है, जनरली जून में, कामाख्या टेम्पल में, गुवाहाटी असम में। कहा जाता है कि उस टाइम पर जो गॉडेस है वो एनुअल मेंस्ट्रुएशन से जाती जो है वो फेस करती हैं और ये श्राइन इसलिए क्लोज किया जाता है। ये फेस्टिवल जो है फर्टिलिटी से एसोसिएटेड है। अब अगर हम कामाख्या टेम्पल देखें, नीलाचल हिल पे लोकेटेड है ये, सदर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर में। वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड सेंटर्स है ये तांत्रिक प्रैक्टिसेस की। यहाँ का अगर हम आर्किटेक्चर देखें तो ट्रेडिशनल नगर और सार्सनिक और मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है और नीलाचल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इसको हम कहते हैं, ओके। So now let us see all these topics in English. So the first topic is India-US trade talks. This topic is important for economy and international relations. So Union Commerce Minister has begun high-level talks with US trade representative to finalize the first tranche of an India-US trade deal, even as India's trade surplus with the US has fallen by over 40%. So India's goods trade with the US totaled an estimated $149.4 billion in 2025, and the relationship has expanded beyond just merchandise trade, and it is now including services trade, investment flows, technology cooperation, strategic supply chains. At the same time, India-US trade ties have often seen friction over tariffs, market access, agriculture subsidies, digital regulation, and localization rules. A central issue between India and US trade ties is the fact that India traditionally enjoys a surplus in merchandise trade with the US, but US does not see it through a very good lens. A wider trade environment has become more uncertain because the US is going to complete its 301 section investigation, and it will unveil a new tariff architecture. This can become an alternative to reciprocal tariffs. So data from Commerce and Industry Ministry is showing that India's trade surplus with the US has declined by over 40% since the negotiations last year. This sharp decline is showing that India's trade position with the US has weakened even before the deal is concluded. So this decline in surplus is linked to a number of concessions and changing import patterns. Indian public sector refiners signed a one-year deal with the US to import 2.2 million tons per annum of US LPG. Similarly, the US has become India's top source of LNG.
and US has also gained greater export access in energy and premium consumer segments. So India's trade surplus is shrinking in several sectors beyond just energy. For example, in electronic components, India's exports fell from 33%, and India's exports from the US jumped 136%. A similar pattern was visible in organic chemicals, uh, copper products, motor vehicles, fresh fruits, scientific instruments, and in many of these categories, exports slipped while imports rose sharply, which points to stronger US competition in the Indian market. A major concern is the sector of agriculture. Several farm groups have warned that the government should not compromise on farm imports because the US has one of the largest agriculturally subsidized programs in the world, and and particularly the concerns have been raised by the producers of apples, almonds, walnuts, soybean, cotton, and rubber. So these trade talks are coming at a time when the US is preparing a new tariff regime under Section 301 process. This agreement is not just about improving trade ties but also shielding us from future harsh tariff action. Okay, so the current round of India-US trade talks is important for several reasons. First, it will shape the future of India's access to one of the biggest export markets, and second, it will be coming at a time when India's trade surplus with the US is already narrowing. Agriculture remains politically and economically sensitive, and finally, the talks reflect a broader strategic balancing act. Okay. So the next topic is Western Ghats ESA. This topic is important for your environment section. So Western Ghats ecologically sensitive area notification, which is currently valid until the end of July 2026, is once again in focus because six state governments continue to resist the finalization of ESA boundaries. So what is Western Ghats? So Western Ghats are basically an unbroken mountain chain which stretches from 1500 kilometers along India's western coast. The Ghats are one of eight hottest hotspots of biological diversity in the entire world. They are hydrologically critical. Western Ghats are densely populated, and it spans six states: Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu. Under the Environment Protection Act of 1986, the central government can notify certain areas as ecologically sensitive areas, also called the eco-sensitive zones. The idea is to regulate or prohibit activities which could damage fragile ecosystems. In an ESA, activities like mining, quarrying, red category polluting industries, thermal power plants, and large construction in townships are either banned or heavily regulated. So there are two panels which have submitted their reports. First is the Western Ghats Ecology Expert Panel, chaired by ecologist Madhav Gadgil, which submitted its report in 2017. It took a strict position. It said that entire Western Ghats should be declared as ESA. So states and local communities found this too restrictive, and they strongly opposed it. Therefore, okay. So, therefore, the government later on formed the Kasturi Rangan panel, and this panel found that 60% was already of this Western Ghats was already cultural landscape, basically, which was being used by the people. The remaining 40% must be classified as natural landscapes, and only this 60,000 square kilometer, that is the 40% area, should be notified as ESA. So government accepted this demand. Okay, so center issued the first draft ESA notification in March 2014, and since 2014, ESA draft notification has been issued and revised 6 times. A notable change in July 2024 notification is that for the first time, it introduced a provision that the government would finalize ESA in a phased and state-wise manner. So why states are opposing it? Because the core objection is economic. ESA notification will impose severe restrictions on industrial activity, mining, quarrying, construction in the territory. So therefore, states are opposing it, and most importantly, Karnataka has been the most resistant to this ESA. Okay, so in 2022, the central government constituted a new expert committee under Sanjay Kumar, which is considering at this moment financial incentives for states who will be protecting the Ghats, and another mechanism called the payment for ecosystem services is also being studied, where states will receive financial compensation for the ecological services that their forest provides. Okay. So the next topic is Anthropological Survey of India. This topic is important for your art and culture section. Human skeletal remains which have been found by ASI at Rakhi Gadi in Haryana
have been handed over to Anthropological Survey of India. So Anthropological Survey of India is a government-funded organization which conducts anthropological research and studies on the diverse cultures of India. It is the only research organization to pursue anthropological research in central government under the Ministry of Culture. Its headquarters is in Kolkata. It was established in 1945 under the leadership of Dr. S.C. Roy. It was initially set up to study the tribes and castes of India and their way of life. Over the years, it has expanded its research ambit to include the study of the entire gamut of Indian society. So the next topic is Nirbhay Chetna Initiative. This topic is important for your social issues and governance section. Central government has rolled out the Nirbhay Chetna Initiative to sensitize 17.5 lakh male elected representatives. So this is a key intervention under Nirbhay Raho initiative. So this is the first of its kind national initiative being implemented under Nirbhaya Fund. So Ministry of Panchayati Raj is implementing it, and the aim is to strengthen gender responsive governance through Panchayati Raj institutions. So this initiative will sensitize elected male representatives on gender equality and women's safety. It will also focus on capacity building and legal awareness among elected women representatives. It will also envisage installation of CCTV cameras at strategic rural locations. Okay. So the next topic is Ambubachi Mela. This topic is important for our art and culture section. So the annual Ambubachi Mela, which started at the revered Kamakhya temple, has started at the revered Kamakhya temple. So Ambubachi Mela is held during the monsoon season, generally in generally in June, at Kamakhya temple in Guwahati, Assam. So this period is believed to be the period of goddess annual menstruation, and the shrine is closed for this purpose. So this festival is associated with fertility. So Kamakhya temple is situated on Nilachal Hills and on the adjoining southern bank of Brahmaputra river. It is one of the most revered centers of tantric practices. It has been modeled out of a combination of two different styles. The first one is the traditional Nagara and Sarsanik and Mughal style of architecture, and this unusual combination has been named as the Nilachala style of architecture. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.